pronoun. What is pronoun? Pronoun क्या होते हैं? A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun जो है noun के जगह पे यूज किया जाता है. For example, he, she, it, my, mine, ours, yours, yourself, you, I, and you, etc. For example, I am a teacher. This is my book. This is my book. And you love me. You love me. I and my and you. This is called pronoun. This is called pronoun. And now another example is that book is mine. That book is mine. Mine, which means pronoun. This is called pronoun. Okay. So there are different types of pronoun. So let's take a look at all of them in this video. Types of pronoun. How many types of pronouns? So there are 8 types of pronoun. One is personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronouns, distributive pronoun, reflexive pronoun, and indefinite pronoun, relative pronoun, and interrogative pronoun. तो जितने भी ये टाइप्स है प्रोनाउन के, तो इस प्रोनाउंस के अपने ही एक रूल्स होते हैं, एक डेफिनेशंस होते हैं. तो चलिए हम इस वीडियो में आगे इसको टाइप बाय टाइप देख लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? जिसमें हम यूज करते हैं आई, वी, मी, इट, दे, शी, हर एंड अस एंड यू. For example, you love me, we are active, they help us, our country is great. You, we, they, and our. This is called personal pronoun. एंड ऐसे हम ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं जैसे कि मी, अस, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है. एंड हमारा जो सेकंड है वो है पजेसिव प्रोनाउन. तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं माइन, आर्स, योर्स, हीज, हियर एंड देयर के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आवर कंट्री इज ग्रेट. हमारा जो कंट्री ग्रेट है. हियर इज अ गुड हाउस. हियर इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. हियर इज अ ब्यूटीफुल साड़ी. हमारा जो तीसरा है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें हम यूज करते हैं दैट, दीज, दोज एंड सच. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक, दिस बुक आर माइन एंड दैट पेन इज गुड. फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इसमें यूज होता है each, either and neither. For example, each of the boys won a prize. Neither of Charles is just. Either of you can stay. Each, neither and either. And the fifth है हमारा reflexive pronoun. तो इसमें हम यूज करते हैं myself, ourselves, yourselves and himself. Okay. For example, I hurt myself, we hurt ourselves, you hurt yourself, she hurt herself, myself, ourselves, yourselves. हमारा 6 है indefinite pronoun. जिसमें हम यूज करते हैं everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one. For example, everyone believed him. Somebody has stolen my watch. Everyone should love his country. Everyone, somebody. एंड हमारा जो 7th है वो है रिलेटिव प्रोनाउन. जिसमें हम यूज करते हैं who, which, that, as, but and what. For example, I met Veena who was returning from school. Neelu had a book which she bought at a shop. The pen that my father gave writers well. Who, which and that. हमारा जो लास्ट है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. Who, whom, whose, which and what. For example, which is your book? Who are you? Which is your pen? What is there?
If you want to learn English from basics to advanced level, you can also subscribe to my channel. Thank you.